Professorship in Indology and Gandhian Studies at University of Jamaica, West Indies. We warmly welcome our guest of honor and distinguished speaker, Professor Rajneesh Kumar Mishra ji from the School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University. Welcome you all to this World Philosophy Day webinar. The theme is Some Important Aspects of Indian Philosophy. I also warmly welcome Dr. Alak Chaube ji, Registrar of the University, Directors of the schools, divisions, cells and units, Regional Directors, Registrars of the divisions, IGNOU faculty members, including SYTS faculty members, IGNOU students, faculty members and students from across the country, our PRO, Rajesh ji at IGNOU, and participants from across the country. Welcome, very warm welcome to this World Philosophy Day webinar. A brief introduction to what we have been doing in philosophy. The program of philosophy has been housed in the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies at Indira Gandhi National Open University since 2009. We have a range of program in philosophy, from philosophy courses in the old BDP, Bachelor's Degree Program, to BAG CBCS. Then this year in January, we launched BA undergraduate 4-year program in philosophy, masters in philosophy, and 2 SIAM courses, ethics, theories and applications, and applied ethics have all been housed in our School of Study, Interdisciplinary Study. This year, we are organizing the World Philosophy Day webinar, and as I already said, the theme is Some Important Aspects of Indian Philosophy. World Philosophy Day was established by UNESCO in 2002 to encourage dialogue and philosophical reflection among different societies and cultures. It promotes the philosophical tradition of discussions and encourages us to ask questions concerning existence, nature of reality, knowledge, ethics, and human condition. Philosophy is just not an academic discipline, but a way of life. It is a method that challenges one to question their assumptions and search for truths about us and the world, from the ancient Greeks to modern thinkers. Philosophy has provided humanity with tools to navigate the complexities of life, to find meaning, and to build a more just and understanding society. With that brief introductory remarks, I would like to share an information with you. I met with the Honorable Vice Chancellor, Ma'am, Professor Uma Kanjilalji, this morning. She has requested that she has a very urgent work right now, and therefore she has asked us to go ahead with our webinar. So now I request my senior colleague, Professor Shubhangi Vaidya, to invite our keynote speaker and chief guest, Professor Balaganapati Devarakonda ji. Thank you. A very good morning, everybody. Thank you for joining this very, very important webinar. And I express my thanks to Professor Nandini Sinha Kapoor, ma'am, the Director of the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, and the coordinator of the philosophy programs of the school, for giving us such a succinct overview of the aims and objectives of philosophy and the work that the school is doing towards this direction. As she has mentioned, we have been celebrating World Philosophy Day for the past several years, and it is my great privilege and pleasure to invite our keynote speaker of the day, Professor Balaganapati Devarakonda ji, to address the gathering today. A brief introduction to his immense work and achievements. Professor Devarakonda is a professor of philosophy at the University of Delhi and has served as the ICCR chair for Indology and Gandhian Studies at the University of West Indies, Jamaica. His research interests include the historiography of Indian philosophy, the philosophy of religion, social and political philosophy,
and philosophical practice. He has widely published on a range of interesting contemporary issues as well, and has also held key administrative and advisory positions in various institutions of national and international repute. His contributions bridge philosophy as an academic discipline as well as philosophy as a practice. His work combines rigorous scholarship with practical engagement, addressing the contemporary challenges through the lens of philosophy. We look forward to your address, sir, on the topic Reading Pedagogical Tools of Indian Knowledge Systems, a study of the Chandogya Upanishad. Welcome, sir. Namaste. I hope I am audible. Yes. Thank you so much, Professor Shubhangiji, for that kind introduction. And Abhaya Namaha, as I often begin with the ancient Indian saying, Shanti Mantra, which tells us Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrutyonma Amrutangamaya. Lead me or lead us all from darkness to light and Sat to Asat and death to immortality. Om Shanti Shanti Shanti. So all enterprise of knowledge is in fact expressed in these three lines that ancient Upanishadic wisdom tries to present to us. From our childhood till death, this is the moment that we find knowing the unknown. And that's where I'm going to root my talk today, which is on reading pedagogical tools of Indian knowledge systems, a study of Chandogya Upanishad. But before I do that, let me express my sincere thanks to Professor Nandini Kapoor for this kind introduction. Thank you so much, ma'am. I have been witnessing the kind of work that you are doing in supporting philosophy at IGNO. I really appreciate your efforts in revising the syllabus for the master's program and undergrad program at IGNO, and also every year doing this World Philosophy Day, celebrating this World Philosophy Day. I am also actually feel very honored to be sharing this virtual dais with Professor Rajneesh Mishra ji, who is a very good friend of mine, and we have been fondly associated in this intellectual enterprise. And all the colleagues from IGNO and other invitees and friends who have joined us today, namaste to all of you. As I said, I have chosen this theme because I felt that there is a lot of discussion that is going on with regard to Indian knowledge systems. And there is no better occasion than World Philosophy Day to celebrate the Indian knowledge system. So, World Philosophy Day, which is ordained by UNESCO, has given us this wonderful opportunity of understanding the importance of philosophy, not just to philosophical academia, but to the whole humanity at large. So, in this particular context, we witness in the recent past huge amount of interest in Indian knowledge system. But I'm quite happy about the kind of interest that got generated in the recent past. I am also a bit concerned about this interest because people who have been giving talks on Indian knowledge system are not very grounded in the texts of Indian knowledge system. And I'm very happy, Professor Nandini Kapoorji, that you have invited the fitting person, right kind of a person, Professor Rajneesh Mishra, who is involved in the textual studies. No, unless you read the text, you talk about Indian knowledge system, which is a peripheral kind of one. So I strongly argue that people who have been giving lectures on Indian knowledge system must read the ancient texts and then bring out what is what is the unique contribution of Indian knowledge system, which is relevant to the present times, and bring out that and present to us is very important to us. And my humble effort today is a very humble attempt in that very direction. Um,
what I have been doing is reading Chandogya Upanishad of Samaveda, and I am only reading a particular chapter, sixth chapter in this Chandogya Upanishad. Uh, when I look at Indian knowledge system and recent interest in Indian knowledge system, many people have asked me like, can you tell us what are the research methodologies that are existent in Indian knowledge system that we can present to our researchers and tell them that, oh, these are the already existent research models that you should adopt. So I was quite happy about that kind of an interest. But I thought research methodologies, people have been working on it. For example, Buddhist model of research and Advaita model of research have already come up. But unfortunately, not many people have looked at the teaching methodologies and pedagogical tools of classical Indian knowledge system. So I thought I would focus on this less touched area so that at least some kind of interest would be generated among the audience to look at the classical texts, which they may know already, but they might not have looked at them from this particular angle. So that is my intention in choosing this theme, reading pedagogical tools, Indian knowledge system, by looking at Chandogya Upanishad of Samaveda, sixth chapter of Chandogya Upanishad of Samaveda. So I thank once again Nandini ji for giving me this opportunity to go back to the text and come with something interesting that would be useful to all of us. Now, this particular chapter of Chandogya is a discussion between father and son. Father is Uddalaka and son is Swetaketu. And it tries to establish one of the Mahavakyas of Upanishadic tradition, Tattvamasi. Okay, so which means you are none other than that. So that's what is being established, which means Upanishads time and again emphasize this point that the Atman is non-different from universal consciousness. Atman, as you put it in a box, like in the body as a box, appears to be different, but otherwise, when you see it as consciousness, it is non-different from the universal consciousness that is always existent. So this is to be established. But the story begins this way. Very interesting kind of story and the conversation. We often talk about Socratic method in Plato's dialogues, but actually, this dialogue is also a wonderful dialogue where different pedagogical tools were employed by the father to teach the son that the son is none other than the ultimate reality. So, what happens in this whole story? I'll try to briefly explain and also explain the pedagogical tools that were employed so that it generates some interest among the audience in looking at the text from a different perspective. The story begins this way that uh, father asks his son that you should go and train in Vedic knowledge system. And the son goes to a teacher, studies Vedas for 12 years and comes back home. And it appears that the son is a bit like possessed in the sense that I know kind of feeling. I will not say it's an arrogance, but a kind of attitude that he has learned the Vedas within these 12 years completely and exhaustively. So father tries to observe this kind of an attitude in his son and asks a very interesting question. That is the beginning. Okay. So the beginning of the dialogue is the father asking the son whether you know everything. Okay. So in order to pose this question whether you know everything, how does the father articulate the question is very important. He says, Yen asrutam srutam bhavati amatam matam avijñatam vijñatam iti. So this is a very simple question. Okay, it says by knowing what, everything that was unheard becomes heard, unthought of becomes thought of, unknown becomes known. See, it's a very interesting question in the sense that you will find similar kind of question in
Mundaka Upanishad as well, where the question comes like Kasminnu Bhagavo Vijnate Sarvamidam Vijnatam Bhavati. So by knowing what, you can know everything that exists. Is it possible to know everything by knowing one? So the father's posing of this question itself in the beginning is such an intriguing one that the son immediately thinks, is it possible that by knowing one I can know everything else? It looks to be very perplexing and troubling kind of one, right? So I mean, often we come across like, how do I teach something in the classroom? The first tool that was employed by the father is that you should pose such kind of a question or a dilemma that the student immediately gets intrigued by the question and the dilemma that you have posed, that he would stay continuously with you until he gets everything clarified in his mind. So the very first question is, by knowing what, everything unheard becomes heard, which means you never heard about it, but still it becomes heard. And the things that you haven't thought of becomes thought, and things that you don't know becomes known, which is very perplexing kind of one that the father asks the son. I mean, now onwards, I will not use father and son, teacher and student, so that it would be more pedagogical in nature. So the son gets really troubled. He says, how is it possible? Because by knowing one, I can only know one. See, if I know this pen, I only know the pen. I cannot say that I know other pens, not even other pens, right? So if that is the case, how can such kind of knowledge be possible? And once the teacher understands the curiosity that came up in the student, that then this father gives a very interesting kind of examples or analyses, which again further sustain the interest of the student until the end of the discussion. Which means this particular text, I mean particular chapter, which is called uh, the particular sixth chapter, basically has 16 khandas, okay, which means sub chapters, and all these sub chapters try to the teacher tries to establish this knowledge, or give this knowledge that to his student, that by knowing something you can know everything else that is possible. Okay, this is where I want to emphasize another interesting point. This is a kind of metaphysical question, and this is again something that is specific to Indian knowledge system alone, where it is posited that by knowing one, everything else can be known, because we are not so empirically oriented, rather metaphysically oriented in understanding the nature of things. Whereas elsewhere outside India, you may find people asking empirical questions, which vary from where the objects vary from each other, and in this empirical kind of an orientation, by knowing one you can only know one. Okay, so that is the difference. So the analysis that the father tries to provide are again interesting. He begins this second khanda, he begins by saying, uh, he gives three analyses. He says, if imagine that there is a pot made up of clay. So if you look at a pot and understand that it is made up of clay, can't you understand everything that can be made up of clay? Okay, which means if you know an object, and if you know out of which it is made up of, okay, you can easily understand all the objects with which it can be made. Okay, so this distinction is interestingly presented. Let us assume that there is pot here and there is clay here. The difference between pot and clay, basically both of them are clay.
only thing that makes pot to be pot more than clay is its name and form. That's what the teacher tries to establish by saying that everything that is made up of gold is definitely gold alone. Everything that is made up of clay is only clay, except that it has assumed a different name and form. Okay, nama and rupa, these are the only things that make an object to be differently appearing to us and serving some purpose for us, to us in the empirical world, which means only it has only a transactional value rather than any other kind of value. That's what the father tries to establish to the son by giving three examples. One, clay and the pot. The second one is gold. You have different ornaments that have come up, but when you look at them, you understand them to be made up of gold. So, by if you understand the material, then you can always make different forms of ornaments, which are only different in the sense of name and form, but otherwise at the material level they are the same. Similar is the case with this. The third example is very interesting. I was shocked when I read the third example. It talks about nail cutter. See, Samaveda, we are talking about Samaveda, we are talking about Chandogya Upanishad. Even if you go by the British, I mean, American or European calculations of the fixing the time of the text, it is at least 6,000 years old, according to their calculations. Indians of that time know nail cutters 6,000 years back. So that's what it shows, which is again a very interesting kind of thing to be noted. So basically, the father, by giving these three examples, that if you know the clay, you know all the objects that can be made up of the clay. If you know some gold, then you know that there are different kind of ornaments that can be made out of gold. And when you look at them, you understand them, they're nothing but gold with different names and forms. Similar is the case with any material, I mean iron. So but he just give these examples. So what is being established here is a teaching pedagogy. I have to emphasize, because my concern is not to narrate the story of the chapter, rather to establish the teaching method tools, pedagogical tools that are employed. The teaching pedagogical tool that is employed here is causal patterns. Three causal patterns are established to show the son, or instigate the son, instigate curiosity in the student by the teacher. Okay, so how is it causal pattern? Because he says, if you know the cause, you can know all the possible effects of that cause. Okay, because Indian tradition has a different conception of causal theories. It argues that either the effect pre-exists in the cause, or effect doesn't pre-exist in the cause. Okay, on the basis of this, we have two different theoretical perspectives that have come up. And obviously I'm talking from the perspective of Advaita Vedanta, which argues that the effect pre-exists in its material cause. Okay, but it exists in a vivarta form. I don't want to get into those details because it would take long time. Since that is how, what is being established through this explanation is by no karana vijnanena. If you know the cause, then you can know the possible effects that can come out of that cause. That's what is being established. Because all these ornaments, different forms, are only effects. And if you know the cause, material cause, gold, then you know that all the ornaments that you find are only different names and forms which appear to be effects. Okay, so that's what is interestingly established. In fact, it also makes a distinction between paravidya and aparavidya. Okay, we often hear these two terms, right? Paravidya and aparavidya. And it argues that
knowing the causes or study of the knowledge of the causes is Paravidya. Study of the names and forms, Namarupa, which is a kind of empirical evolutes that we look at, is Aparavidya. So the wonderful kind of distinction and the jnana and vijnana that we talk about, para and aparavidya that we talk about, and also knowing the causes and knowing the effects. Is it that we should live only with the effects? Of course, we live with the effects, but it is required that in order to live with the effects, you should know the causes which make this effect come into existence. That is how what is presented here is in terms of um, uh, what is presented here is in terms of causal connectives. Okay, so that is the pedagogical tool that was first employed by the father, teacher, to make his student get intrigued and get into the conversation as to how does this happen. So the opening itself is by posing a question which is very troubling kind of one, and then giving causal connectives, three causal connectives of answering the question, understanding the question, and pushing the student to get more involved in the discussion is the interesting pedagogical tool that was employed here. And further, while explaining, he says, Sadeva Saumya Idamagra Asit. This is how he begins, saying that Sat is the only thing that was existent in the beginning. This is again another interesting aspect that we should know, friends. We often in philosophy talk about metaphysics and epistemology. Okay, metaphysics is said to be study of reality, understanding reality, and epistemology is a branch of philosophy which tries to give us how you get the knowledge and what are different ways of knowledge, what is the nature of knowledge. So it is called theory of knowledge. Okay, this distinction is a Western kind of oriented distinction. But when it comes to Indian tradition, Sat is such a uniquely developed concept, Sat, okay, which is both metaphysical and epistemological at the same time. If I ask you what is Sat in your own languages, okay, all Indian languages have this word Sat. Look at the meanings of Sat in your own language, uses of Sat in your own language. We use it as reality, we use it as truth as well at the same time. So, in that particular sense, the conceptualizations of classical Indian tradition are so holistic that there is no distinction. So, epistemological and metaphysical distinction that we talk about that exists. Subsequent to this discussion, saying that Sadeva Saumya Idamagrasi, it's in the beginning, there was nothing else except Sat. So again, this question comes like, how does Sat or existence come into existence? Existence coming into existence. Is there anything before existence that out of which this existence has come into existence? Such kind of questions come up, but these were wonderfully explored in another Veda, Rig Veda. In the 10th mandala, we have Nasadi Sukta, which explores these interesting intricacies. I'm not going into those intricacies, but if you are interested, you should read this Nasadi Sukta, especially if you are interested in cosmology or cosmogony, that the modern astrophysics now talks about. You would find such kind of discussions happening in Nasadi Sukta. Okay, don't think that I am trying to boast of Indian knowledge system. I have read them and understood them and taught them. That's why I'm telling you that the discussions were so profound. Okay, so it's not a superficial kind of a statement. I'm making this statement after reading them and thoroughly understanding them. So and then he goes on to explain this cosmology, cosmogony. Okay, cosmology is theory of knowledge which talks about the evolution and nature and subsequent developments of cosmos. But cosmogony specifically talks about how the world has come into existence.
And the discussion on how the world has come into existence is explained in this particular text from second khanda to almost sixth, seventh khandas. Okay, where Uddalaka, in order to explain that by knowing one you can know everything else, he says Sat is the first one that you should know, and out of Sat, the existence itself, when it decides that it should become more, Tejas comes into existence. Again, this is another interesting problem that we come across when we try to understand Indian knowledge system, because if you read even the translations of Chandogya Upanishad, 6th chapter, many people have translated this Tejas as fire, which is a very kind of distortive kind of understanding. In fact, I often say when we teach or when we talk about Indian knowledge system in English, we are already distorting 50 to 60% of what it tries to convey. Remaining 10 or 15% may go away in the process of communication between speaker and listeners. So that is how it is very less amount of knowledge that we can transmit by using language, English language. But I would suggest if you read translations in your own language, whatever may be your Indian mother tongue language, you may get better access to the philosophical classical Indian philosophical text than reading an English translation. English translation should be the last one to be explored. The first one that should be explored is your own mother tongue language translation. So he explains saying that when the Sat, or the initial, the primordial existence, which is called Sat, desires to become many, then Tejas comes into existence. And when the Tejas desires to become many, then Apas is water, comes into existence. And when Apas tries to desire to become many, then Annam is food or earth. Okay, earth, food comes from earth, so that comes into existence. This is how it's called Triputi Prakriya, on the basis of these three. Like if we have to use the modern terminology, it's like fire, earth, water, and fire. Okay, Prithvi, Apas, Tejas, a combination of these three. Everything that is existent in the world has come out of the combinations of these three, which is very well explained in a scientific manner in this text. You can read the text. I'm just giving you a hint so that you can get curious of trying to know what happens in this text. Because recently, one of my colleagues asked me, is it that Vedic knowledge system is scientific? Then I said, you please tell me, what do you mean by science? He said, it should explain causally everything. And it should try to give a continuity of knowledge. So I told him, if you consider these two qualify something to be science, then you go back to you read any of the Upanishadic texts. They fit into this kind of a definition that you are giving me. Or you give me, any of your friends, you give me any definition of science that you may have in your mind. I can show you those very aspects to be there. That is how, in Indian tradition, philosophy, religion, science, spirituality, for all these things, the text is called Shastra. Shastra is the only word that you use which encompasses, which brings science, spirituality, religion, and philosophy, all four of them together. Shastra is the word that we use. So scientifically, he tries to explain, the father tries to explain the son that out of these three, Sat to Tejas, from Tejas, Apas, which means water, and from Apas, Annam, which is earth, which means food. Combinations of these three is the one which makes the empirical world come into existence in terms of subtle, gross, and grossest. All these things
come into existence. This is what is explained. But the son says, oh, whatever you are saying is fine, but I don't understand what you are saying. Okay. And then see the son, I mean the student, by then has already studied Vedas. Okay. And he boasts himself that I know Vedas. And even then, the knowledge is knowledge that is to be understood, which is to be imparted here is you are non-different from the universal self. Doesn't appear to be appear to have got into the mind of the son. So now the son, the father, the teacher has to give him this knowledge in such a way that the son understands that yes, now everything has got into me clearly. Okay, so now there are different kind of further different kind of strategies that were employed by the son. The teacher explains, saying that when you eat food, the subtlest of the food becomes your manas. This is again a problem. How do you translate manas? We loosely translate manas as mind, which is a very distortive kind of one. Okay, mind and manas are not the same. And in fact, when it comes to Indian tradition, manas is understood in terms of mano, buddhi, ahankara, chittani. Okay, all these four are together considered to be manas. Okay, where chitta is storehouse of memory and buddhi is intellect, whether you call it rational or emotional, whatever it may be. It's the one that processes rationally. It's like algorithm. And then manas is the volitional organ which takes decisions. And when manas, on the basis of buddhi, intellect, takes decisions which are rooted in the memory, then what you get is ahankara. I have done it. It's me who has done it, right? So that is how mano, buddhi, ahankara, chittani together were called manas here. And this manas is because gets nurtured by the food that you eat. That is how they say, as per your food, your thinking also would be. So you have to be very careful about the food, according to some of the Ayurvedic tradition at least. And then water, apas, is the one which nurtures, subtlest part of the water is the one which nurtures prana. So there is a distinction between manas and prana. Obviously, we understand. Even if our manas goes out, our prana is still with us, right? So that is how it talks about the subtlest part of apas becoming prana, and subtlest part of tejas becoming vak. Okay, so that's how the text tries to explain us how the same tejas, apas, I mean water, and then food nurture three metaphysical or subtle elements within us in terms of manas, prana, and vak. Okay, so these three are not material things, but these are rooted in the material. That's what is being explained here wonderfully by the author, which says, Annamayam hi mana, apomayaha pranaha, tejomayi vak. Okay. So the son says, obviously, that the student says, what are you talking about? How can food become manas? I don't understand all this. Then the son, the teacher tries to give examples, analogy. He gives a wonderful analogy. He says, when you churn the curd, what happens? The butter comes up, right? So the finest part, which is butter, comes up. Similarly, I mean, is it that the butter is not there in the curd? It is there. But is it visible? No. Only when you churn it, the butter comes up. Similarly, when you eat, the subtlest part comes up. And that's what becomes when you eat food, manas. When you drink water, pranaha. When you consume heat, it becomes our vak. Okay, speech. The other one that I'm emphasizing here is analogy is employed, and then the son further, the teacher further tries to explain different aspects, and the student always says,
It appears to be interesting, but I still don't understand. Please explain it further. No, this goes on. In fact, in this particular discussion of 16 khandas that I'm talking about, at least 10 times the son says, "Oh, I didn't understand it fully. Please explain it again." Uh, Try to understand one thing. It is not that the student or Shwetaketu is not understanding. uh, Keeping the authors, keeping the diversity or variedness of our intellectual acumen, in order to satisfy different ways of different kinds of understanding of the readers, so many times same thing was explained, so that I mean different pedagogical tools were employed, so that anybody, no, would easily understand when somebody continues to read till the end of what is being explained there. And he says, what is the relation between prana and manas? How can, if I stop eating, is it that my manas will not work? No, this is not quite understandable. This is where the father employs a kind of experiential way of teaching the son. He says, okay, you stop eating for 15 days and come back to me on the 16th day. Okay, but you drink water, because he already told him that water is the one which sustains, nourishes the prana, and food nourishes manas. So now the father, the teacher tries to give a demonstrative or experiential knowledge to the son, and he encourages him not to eat for 15 days and come back to him. And the son doesn't eat anything. He seems to be a sincere student, unlike most of us. So he doesn't eat and comes back to his father on the 16th day, though he consumes water whenever it is required. So he is alive, definitely, after 15 days. But then the father asks, can you recite the Vedas that you said you have already studied quite well? Then the student says, "No, I don't remember. I can't recollect uh, any of these Vedas that I have studied quite well." So then father tries to explain that, as I told you already, Manas is Mano Buddhi Ahankara Chittani. Chitta is the storehouse. When you don't eat food, you don't nourish your manas, which means one of the important aspects of manas is chitta, which is the storehouse of your knowledge, and you don't get access to that properly. And when you don't get access to that properly, you can't recollect and speak and talk about it, right? So that's what is being demonstrated through this experiential knowledge to the son. I think I should not go more into these pedagogical aspects, but further, because there are other things as well. uh, at one place, he tries to give conceptual attribution. At another place, he tries to provide demonstrative, experiential knowledge to the son. For instance, he tries to explain that the Sat reality is not always visible to your eyes. But by then, you cannot argue that since it is not visible, Sat doesn't exist. So he says, you bring a banyan tree seed, okay, Nyagrodha Vruksha Bija, okay, and then the teacher asked the son to break the Nyagrodha Vruksha Bija, which means banyan tree seed. And if you break banyan tree seed, there would be many seeds inside. Okay, he says you take out one seed and break it further. The student breaks it, and then see it would be very small. And when he breaks it, the son father the teacher asks, what do you see inside? He says, I don't see anything inside at all. Okay, but that seed is the one which can make this kind of a tree, big tree in front of you. Banyan tree is taken because banyan tree is the big tree, it's not a small one. So that big tree has, I mean, this small seed has the potentiality of becoming that big tree. And in fact, what you see inside is nothing. So, since because it's not visible to you, can you argue that
the seed doesn't have the potentiality of becoming a banyan tree. So basically, subtle ways of demonstrative and experiential knowledge tools were provided in this whole discussion to explain the point that Tattvamasi Swetaketu, you are none other than the ultimate reality, or your consciousness is the same as the universal consciousness that exists. Only difference between you and me is in the form of name and form, right? So I found that there are almost, I think, 7 drishtantas. This is again another unique mechanism that the father employs to teach the son. Drishtanta is loosely translated as example, but even in this example, there are different kind of different varieties of examples that he provides. Drishtanta has to be like something that is visible to you in the empirical world around you, which tries to hint you to go beyond them. Okay, I cannot give an example which is not available to you, to your senses around you. It has to be available in your empirical vicinity, through which you can easily grasp the meaning or understanding or intended lakshartha of what is being posited. So he gives the examples of river, he gives the examples of honey, he gives the examples of mixing salt with water. He gives many different varied kinds of examples to make the son understand that understand this particular verse, particular intended um, explanation or intended knowledge, that he is none other than the ultimate reality or pure consciousness. So I don't, because the time given to me is only 30 minutes, so I don't want to go beyond my time. But what I'm trying to establish here is the point that there are different teaching methodologies which Uddalaka, the teacher, employs to make his son Swetaketu understand, uh, initially by raising his curiosity. This is there is something called progressive learning that some of the modern pedagogical experts have now invented and try to provide us. But these different kinds of pedagogical tools were employed, say, at least 6,000 years back in this particular text called Chandogya Upanishad. So I felt that it is required on the part of the experts of Indian knowledge systems to go back to these texts and bring out these unique aspects, and also make them relevant and make them become tools for our own learning now. So that's my intention in talking about this particular text. Thank you so much for this wonderful opportunity provided to me. I know that I did not present it in an exhaustive way, but considering the limitations of the time, because this is a 3-hour lecture that I give on different platforms, I have reduced it to 30 minutes. That's how I am only providing a capsule so that it generates interest among you to go back to the text and then read them in a different way. Thank you so much. Namaste. Thank you so much, sir, for a very, very interesting and engaging talk. And you've rightly said that discussions on Indian knowledge systems must be grounded in a deep and close reading of the primary texts. And with great skill, you've walked us through the 6th chapter of the Chandogya Upanishad, bringing out some really interesting aspects of knowledge and the search for knowledge. And as a teacher, I think this is a particularly relevant and interesting lecture for me personally, because it brings out elements of pedagogy which I think are so very relevant. And those of us in the distance learning system particularly need to reflect a great deal on pedagogy and the way it has been conceptualized in our classical texts and in our thought. So thank you very, very much for this extremely illuminating lecture. And no, it has actually stimulated us because it was an encapsulated form. I think it's given us a lot of food for our own interest and our own research and finding a way forward in some of the critical issues that you have raised. So thank you so much.
It is now my pleasure to invite our second distinguished speaker of the day, Professor Rajneesh Kumar Mishra, to deliver his talk. Professor Rajneesh Kumar Mishra teaches at the School of Sanskrit and Indic Studies at the Jawaharlal Nehru University since 2001. His teaching and research areas include Kashmir Shaivism, Buddhism, Sanskrit linguistics and poetics, Asian literature, philosophy of language, comparative poetics, and comparative religion. He's also a widely published author with several research articles, chapters, and books to his credit, and is the recipient of the prestigious Okita Memorial Fellowship by the Japan Foundation and the ICCR. We look forward to your talk, sir, on Tantragamic assumptions of Abhinav Gupta. जी नमस्कार. Am I audible? Okay. जी पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे निर्देश हुआ था कि एक व्याख्यान अंग्रेजी में होगा तो दूसरा हिंदी में होना चाहिए, तो मैं हिंदी में बोलूँ या जैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. And another verse is from Tantralok of Abhinav Gupta. That is also a kind of Mangalacharan. Naumi chit pratibham devim parabhairav yoginim matriman prameyanush kiritambus shulambuj kritaspadam. This is first of all मैं तो अपने मित्र और इतने बड़े विद्वान दर्शन के प्रोफेसर बाल गणपति जी का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. सर, आपको बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसी माध्यम से ही सही आपको सुना, बहुत आनंद आया. बहुत गंभीर और बड़े सरल ढंग से आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को, भारतीय ज्ञान के महत्वपूर्ण पक्ष को, जो पेडागॉजी से संबंधित है, कि दर्शन की पेडागॉजी और तत्व की पेडागॉजी कैसे दृष्टांत से की जाती है, उसके माध्यम से आपने हमें समझाया अपने मूल स्रोत ग्रंथों के आधार पर. मैं आभारी हूँ प्रोफेसर नंदिनी जी का और प्रोफेसर शुभांगी वैद्य जी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप सबके सम्मुख आचार्य अभिनव गुप्त पर कुछ चर्चा करने के लिए. यद्यपि समय बहुत सीमित है, तो उस सीमित समय में ही हम प्रयास करते हैं कि कुछ सार्थक चर्चा हम लोग कर पाएं. सबसे पहली बात यह है कि जो ज्ञान विधाओं के नाम होते हैं ना, नामधेय जिसको हम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, वो ट्रांसलेटेबल नहीं होते. पहली चीज तो ये ध्यान में रखने की है. हर सभ्यता संस्कृति में ऐसे अवधारणात्मक पद होते हैं जिनका अनुवाद करना मजबूरी हो सकती है आज के समय में, लेकिन अनुवाद करने के साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी रहता है कि कहीं अर्थ में विपर्य ना आ जाए, अर्थ में कोई क्षति ना हो जाए अर्थ की. और ये होता है. जैसे हमने कई ज्ञान विधाओं के नाम, इतिहास है, दर्शन है, भूगोल है आदि, ये सब जो नाम है न, उनसे केवल विषय क्षेत्र बदल जाता है, बल्कि उसका प्रयोजन और प्रक्रिया भी बदल जाती है अनुवाद करने से. तो एक तो ये बात ध्यान में रखने की रहती है हमेशा. हम अनुवाद करें, लेकिन साथ ही साथ उसके मूल अर्थ को भी कहीं संरक्षित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे, तो इस ज्ञान विधा में हम सार्थक चर्चा कर पाते. दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि हमारे दर्शन को, भारतीय दर्शनों को प्रायः आस्तिक और नास्तिक विभाग में पढ़ने की एक रूढ़ी बन गई. रूढ़ी मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये भी शायद अनुवाद में हमने इसको थीस्ट एथिस्ट समझ लिया है, आस्तिक नास्तिक. मैंने बहुत चर्चा की विद्वानों से, संस्कृत के जो आचार्य लोग हैं, दर्शन पढ़ाते रहे हैं, कि हमारी अपनी परंपरा के किसी आचार्य ने, किसी दार्शनिक ने क्या भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण आस्तिक और नास्तिक रूप में कहीं किया है, कोई उसका प्रमाण है? और ये 20 वर्षों से मैं ये प्रश्न लेके घूम रहा हूँ, अब तक तो कोई सार्थक उत्तर इसका नहीं मिला. और दूसरी बात यह है, बहुत बाद में आकर के मधुसूदन सरस्वती जी का एक ग्रंथ है प्रस्थान भेद नाम से, प्रस्थान भेद है, उसमें उन्होंने आस्तिक नास्तिक कह करके शुरू तो किया है,
लेकिन उसमें सारे दर्शन जो षोडश दर्शन हमारे हैं, 16 दर्शन श्री माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में, वो सब के सब उसमें समाहित होते नहीं। तो ये कठिनाई है। और शायद इस रूप में हमने अपने दर्शनों को कभी पढ़ा ही नहीं जिस तरह से हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। थीस्ट एथिस्ट के कॉलोनियल कॉलोनियल यू नो उसमें विभाग करके आस्तिक नास्तिक बना करके उसको जो हम पढ़ रहे हैं, तो 3 नास्तिक दर्शन होते हैं और 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। कुल मिला के ये संख्या 9 तक समाप्त हो जाती है। बाकी जो 16 दर्शन हमारे अपने ही आचार्य ने बताया सर्वदर्शन संग्रह में, शेष अन्य दर्शनों को हम इसमें कहाँ समाहित करेंगे, यह एक कठिनाई होती है। तो विभाग मानने में कोई कठिनाई है, इसको नॉर्मेटिव जब हम बना देते हैं इस विभाग को, इस नॉमेनक्लेचर को, फिर समस्या आती है। और केवल हम विभाग ही नहीं बनाते, साथ ही साथ उसमें एक मूल्यांकन भी जोड़ देते हैं, ऊंच नीचे जैसा कुछ एक असंतुलन पैदा हम स्वयं ही करते हैं। इस तरह के विरोधी युग्मों में सोचने की पद्धति भारत की कभी रही नहीं। ये सेमेटिक पद्धति है। 2 विरोधी युग्मों में चिंतन करने की पद्धति भारत की पद्धति रही नहीं कभी। लेकिन अब दुर्भाग्य ये भी है कि हम अपने ग्रंथ भी पढ़ाते हैं तो इसी फॉर्म में पढ़ाते हैं, इसी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। तो ग्रंथ तो हमारे अपने होते हैं, लेकिन उसका जो इसका जो परिणाम या दुष्परिणाम निकलता है वो हमारे सामने आता है। वो हमारे किसी ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाने वाले वो व्याख्यान या इस तरह से ऐसे कहें कि कोई चर्चा हम नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस दर्शन पर थोड़ी चर्चा आप सभी विद्वानों के सम्मुख रख रहा हूँ, वह इस आस्तिक नास्तिक विभाग में कहाँ व्यवस्थित होगा, मैं यह निर्णय नहीं कर पाता, या कभी हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी इस तरह की दुविधा नहीं देखी। पहली चीज तो ये है कि तंत्र जिसको कहते हैं, जिस आचार्य अभिनवगुप्त की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आसन पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में वीणा है, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनके शिष्य नीचे बैठ करके वो सब लिखते जा रहे हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, जटाएं हैं, फूल माला उसमें है। यह वर्णन उनके ही अपने शिष्य मधुराज योगी, जो तमिल प्रदेश के थे, वहां से वो आते। मधुराज योगी संभवतः मदुराई के हैं, और वहां से वो 74 वर्ष की अवस्था में तमिलनाडु से चल करके कश्मीर आते हैं, आचार्य अभिनवगुप्त का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ उनसे दीक्षा लेते हैं और साधना उपासना की विधियों का अभ्यास करते हैं, ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करते हैं, और पुनः 78 वर्ष की अवस्था में वो लौट जाते हैं अपने मूल स्थान। उन्होंने अपने गुरु की स्तुति लिखी है, अभिनवगुप्त की स्तुति लिखी है, जिसका शीर्षक है गुरुनाथ परामर्शः, और इतना सुंदर वर्णन है, ऐसा लगता है कि अभिनवगुप्त साक्षात हमारे सम्मुख उपस्थित हो गए। इतना सुंदर शब्द चित्र है उसमें। उसी के आधार पर यह जो चित्र मैंने आपको दिखाया, यह पेंटिंग बंगाल के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे असित हल्दर जी, उनका बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान संस्कृति कोई एक क्षेत्र में या किसी पूर्वाग्रह या वाद में बंधी हुई संस्कृति नहीं, और उसकी व्याप्ति संपूर्ण भारत में, चाहे कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक देखिए, पूरा विस्तार से। और वहाँ का विद्वान जान रहा है कि अभिनवगुप्त कहाँ है। अभिनवगुप्त ने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। यह एक पद है जिसमें होता है कि गुरु अपने स्थान पर रहता है, एक क्षेत्र विशेष से बाहर जाता ही नहीं। जिसको ज्ञान की इच्छा होगी वो वहाँ करके उनसे ग्रहण करेगा। कम से कम शिष्य को यह लगता है कि वहाँ एक गुरु हमारा बैठा है, वहाँ जाने पर अवश्य उसका शिष्यत्व प्राप्त हो जाएगा। वह कहीं घूम नहीं रहा है, परिव्राजक नहीं है। और दूसरे उस प्रकार के भी आचार्य हमारे हैं, जैसे आचार्य शंकर हैं आदि, तो वो पारिव्राजक आचार्यों की कोटि में हैं। वो हमारी ज्ञान गंगा को, हमारे ज्ञान तीर्थ को हमारे द्वार तक ले आते हैं। तो इस तरह से दोनों परंपराएं अपने यहाँ रही हैं।
भारत जिसको हम कहते हैं उसका अर्थ है भा प्लस रत। भा का अर्थ ही है ज्ञान, उसमें जो रत है संस्कृति, उसके अनुसंधान में उसको उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने में जो संलग्न संस्कृति है, उस संस्कृति का, उस देश का नाम भारत है। और यहाँ जिस ग्रंथ को हमने सर्वोपरि महत्व दिया वह वेद है। और वेद उसको कहते हैं जिसका अर्थ ही है ज्ञान। कई अर्थ इसके हैं, एक विद से ज्ञान अर्थ लेते हैं हम। और इसके लिए कहते हैं कि जो किसी अन्य साधनों से नहीं जाना जा सकता, उसको बताने वाले वेद होते हैं। ये वेद की विद्यता है। कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमित्या वा यस्तोपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेद्यता। कि जिसको प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी भी उपाय से नहीं जान सकते हम जिस तत्व को, उसको जानने का हमारे पास जो साधन है उसको हम वेद कहते हैं। यह वेद की विद्यता है। तो इस प्रकार से वेद को हमने अपने यहाँ से, वेद की प्रामाणिकता की जहाँ तक बात आती है तो वह इसीलिए है कि वह उसका ज्ञान त्रिकालाबाधित है, तीनों कालों से अबाधित ज्ञान है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टेड नॉलेज। यदि कंट्राडिक्ट हो जाएगा फाइन, वो उस दिन से हम उसको प्रमाण भी नहीं स्वीकार करेंगे उस रूप में। लेकिन अब तक क्या कोई भी ऐसा जिसको हम काउंटर एग्जाम्पल, प्रति उदाहरण कहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम उसको प्रामाण्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में ग्रहण करते आए हैं। हमारी अपनी ज्ञान संस्कृति में धर्म, विज्ञान, अध्यात्म, तंत्र, दर्शन, ये कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं गए। यह इस ज्ञान संस्कृति की विशेषता है ना। रिलीजन एंड फिलॉसफी, रिलीजन एंड साइंस, देखिए नोमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा था, ये एक दूसरे के विरुद्ध जा सकते हैं, गए भी हैं, और इनके बीच संघर्ष भी रहा है पश्चिम में। लेकिन हमारी अपनी ज्ञान संस्कृति में धर्म हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, तंत्र हो, दर्शन हो, ये कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि इसके विपरीत ये अनुपूरक हैं एक दूसरे के। तो इस दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष हमारी ज्ञान संस्कृति का हमारे सम्मुख आता है। यह ज्ञान संस्कृति जिज्ञासा से आरंभ होती है। अभी आपने इतना ज्ञान वर्धक उद्बोधन सुना प्रोफेसर बालगणपति जी से, तो उन्होंने इसकी चर्चा भी की। जिज्ञासा, आरंभ जिज्ञासा से है। और हमने यह नहीं कहा कि सब कुछ जान लिया गया है, अब और आगे जानने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हम एक होली बुक में यह क्लेम पाते हैं। आपको ध्यान होगा बेकन का, फ्रांसिस बेकन का वह कथन नोवम ऑर्गेनम के आरंभ में, वो कहता है कि दो प्रकार के लोगों ने ज्ञान की बड़ी क्षति की है। एक तो वो जो कहते हैं कि सब कुछ जान लिया गया है, अब और कुछ जानने के लिए बचा नहीं। और दूसरे वो जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। तो कम से कम हमारे अपने देश ने इस ज्ञान की जो अतिवादी जो दृष्टि है उसमें अपने को कभी समाहित नहीं होने दिया। तो हम आरंभ जिज्ञासा से करते हैं और उसकी परिणति होती है नेति नेति में, क्योंकि बाकी जो कुछ भी है वह हमारे अनुभव में आता है, उसको कहा नहीं जा सकता। यदि जान भी लिया गया है तो वह अनिर्वचनीय हो जाता है। जो साक्षी का अनुभव है, जो प्रमाता का या साधक का अनुभव है, वह शायद यदि कह भी दिया जाए तो आवश्यक नहीं कि सुनने वाला उसी रूप में उसको ग्रहण कर ले। इसलिए उसको एक स्तर पर अनिर्वचनीय ही कह करके बताना पड़ता है। ब्रह्मानुभूति हो या शिवोहम की प्रतीति हो, अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति हो, या रसानुभूति हो, कलानुभूति हो, ये सब एक स्तर पर जाकर के अनिर्वचनीय कह दिए जाते हैं, क्योंकि यही इनका स्वरूप बच जाता है कहने के लिए। हम जिस ज्ञान संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा केंद्र शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से कश्मीर रहा है। दुर्भाग्य से जिस कश्मीर में इतने बड़े बड़े दार्शनिक और रचनाकार आए, सौंदर्य के मीमांसक आए, काव्य शास्त्र के मीमांसक आए, आचार्य आए, उस कश्मीर को काल की इस गति के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा और हमारी ज्ञान संस्कृति को बहुत बड़ी क्षति उसके इस प्रकार के वहाँ के उत्पात और तांडव से हुई। लेकिन
इस कश्मीर क्षेत्र का आप जानते हैं, इसका एक स्थल पुराण है जिसको हम नीलमत पुराण कहते हैं। उसमें इसकी इसकी संस्कृति, इसके उत्पत्ति आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है कश्यप ऋषि आदि के नाम से। वह पूरी कथा वहां पर आती है। इस कश्मीर को हम एक और नाम से जानते हैं और वह है शारदा मंडल। यह शारदा क्षेत्र है, देवी शारदा का मंदिर, यहाँ विश्वविख्यात मंदिर, अ, जिसको हम कृष्ण गंगा नदी कहते हैं, जो अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दुर्भाग्य से है। वहाँ उसके तट पर एक विशाल मंदिर है था, जिसको हम शारदा देवी के मंदिर के रूप में जानते थे, और उसके चारों दिशाओं के द्वार थे। इस जगह आचार्य शंकर भी आए। यही एक देश का एकमात्र सर्वज्ञ पीठ रहा शारदा मंदिर में, सर्वज्ञ पीठ। और उस पर आसीन होने का सौभाग्य या अधिकार, यह प्रतिष्ठा आचार्य शंकर को मिली थी। उनके लिए ही इस मंदिर का दक्षिण द्वार खोला गया और उनको इस तरह से प्रतिष्ठा मिली। यहीं से वो शारदा देवी का एक विग्रह बना करके श्रृंगेरी ले जाते हैं और वहां स्थापित होता है वह विग्रह। इसलिए वहां के देवी का नाम ही शारदांबा है। तो ये श्रृंगेरी शारदा पीठ है। देखिए कैसे यह देश ज्ञान से, चैतन्य की एकात्मता से, यह कैसे देश जुड़ा रहा। हमारे सारे ग्रंथ इसी चैतन्य की एकात्मता के प्रतिफलन है। इस रूप में आचार्य अभिनवगुप्त को हम पाते हैं कि वो संपूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति के व्याख्याता आचार्य है। बहुत कम ऐसे आचार्यों में आपको यह संयोग मिलेगा कि वह एक साथ ही दर्शन, तंत्र और अध्यात्म साधना का भी गुरु हो, आचार्य हो। यह विलक्षण संयोग, यह दुर्लभ संयोग आचार्य अभिनवगुप्त के व्यक्तित्व में हमें प्राप्त होता है। तो इनका काल 10वीं 11वीं शताब्दी का है। और यदि मैं आपसे चर्चा करता हूँ थोड़ी सी इनके बारे में, हमने विषय जो रखा आगमिक अजम्पशंस। तो आगमिक जो इनका आधार है, वेद और आगम, जिनको हम आगम ग्रंथों को हम तंत्र ग्रंथ भी कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं, स्रोत हैं। निगमागम मूलक संस्कृति है हमारी। निगम वेद को कहते हैं और आगम तंत्र के ग्रंथ को। दुर्भाग्य से तंत्र का अर्थ भी विकृत हुआ और उसके चलते का बहुत सारी कठिनाइयां। हमने अपने विशाल वांग्मय को कभी अध्ययन अध्यापन के योग्य विश्वविद्यालय पद्धति में समझा ही नहीं, और आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन सबको समाहित करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो तंत्र शब्द का जो अर्थ है, एक तो देखिए 2 धातुओं से इसको हम प्राप्त करते हैं। संस्कृत में आप जानते हैं कि वर्बल रूट्स जो होते हैं उसके माध्यम से हम शब्दों का ग्रहण करते हैं। तो एक तो है तन धातु, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, तन्यते विस्तार्यते। तो यह तन धातु है। दूसरा है त्रय, जो त्राण करना, रक्षा करना के अर्थ में है। तो तंत्र इस प्रकार से 2 धातुओं से भी निष्पन्न है, और इसके लिए कहा जाता है कि तनोति विपुलान अर्थान तंत्र मंत्र समन्विताम त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रम इत्यम अभिधीयते। तो जो विपुल, विभिन्न, विस्तृत, अनेक अनेक अर्थों का विस्तार करता है, और जो तंत्र मंत्र से समन्वित है और जिससे त्राण, मुक्ति या रक्षा होती है, इस शास्त्र को हम तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगम शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो उसमें पाते हैं असमन्तात। आ जो है समग्रता के अर्थ में, अर्थगमित्यागम। और इसके लिए एक बात ये भी कही जाती है कि आगतम पंचवक्त्रात्तु गतम च गिरिजानने मतम च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। ये स्वच्छंद तंत्र है एक ग्रंथ, उसमें ये बात आती है कि जो पंचवक्त्र भगवान शिव, पंचमुख भगवान शिव कहे जाते हैं, उनके मुख से जो उद्भूत हुआ, जो गिरिजा को प्राप्त हुआ, क्योंकि तंत्र के ग्रंथ शिव पार्वती के संवाद के रूप में हैं। कभी शिव प्रश्न करते हैं, पार्वती उत्तर देती हैं, कभी देवी प्रश्न करती हैं, भगवान उत्तर देते हैं इसका। और जो वासुदेव का मत है उसको हम तंत्र आगम कहते हैं, या आगम शास्त्र के अंतर्गत गिनते हैं।
तो इस प्रकार से वेद और आगम, आगम और निगम, ये हमारी संस्कृति के स्रोत ग्रंथ हैं। हमने यह कहा कि भारत ज्ञान केंद्रित संस्कृति है, और यह ज्ञान किस प्रकार का, यह ज्ञान यह जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ इदमात्मक है, इदम इदम की जहाँ प्रधानता है, प्रायः जागतिक अनुभव, संसार का अनुभव अहम और इदम के रूप में है। मैं और मेरे द्वारा जो जाना गया है, यही संसार का हमारा अनुभव है। अहम इदमात्मकम जगत इसलिए भी कहते हैं। अभी हमारे मित्र बाला गणपति जी ने आपको बताया, आपसे चर्चा की नाम रूपात्मकम जगत की। तो इसी प्रकार से अहम और इदम में एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, इसी रूप में जगत का प्रत्यय हमें होता है। यहाँ भारत की जो ज्ञान संस्कृति है, उसमें अहम पक्ष को सर्वोपरि महत्ता दी जाती रही, और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमें जो ज्ञान है तो उसका ज्ञेय क्या है, किसको जानना है हमें। तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है उपनिषद बृहदारण्यक में कि आत्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा ही जानने योग्य है। आत्मा जो स्वयं को नहीं जानता और चीजों के बारे में जानने की घोषणा करता है, उसका ज्ञान कितना प्रामाणिक होगा। तो पहले सारी इस चर्चा इस बात की है कि पहले हम आत्म पक्ष को, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उस तत्व को हम जान लें। यही मुख्य रूप से ध्येय रहा है, और इसके लिए बार बार आगम शास्त्रों में भी और निगम में भी, वेद में भी ये चर्चा आती है। एक यह ज्ञान चर्चा, इसकी प्रकृति क्या है? हम जब जिज्ञासा से आरंभ करते हैं तो हम ये नहीं कुछ पूर्वाग्रह और दुराग्रह लेकर के ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए एक आचार्य हैं हरिभद्र सूरी, उन्होंने एक उद्धृत किया है अपने ग्रंथ में कि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। यह देखिए ज्ञान की कैसी उत्कट पिपासा और ज्ञान की प्रकृति कैसी है अपनी अपने यहाँ। कहते हैं कि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। कि जैसे कि मुझे न तो महावीर, चूंकि जैन हैं हरिभद्र सूरी, कहते हैं कि न तो मुझे महावीर के प्रति कोई पक्षपात है कि वो जो कह रहे हैं सब ठीक है, न ही कपिल आदि जो मुनि हैं उनके द्वारा जो कहा गया है उसके प्रति कोई द्वेष भाव है। युक्ति मद वचनम यस्य, जिसका वचन युक्ति संगत हो, लॉजिकल हो, कंसिस्टेंट हो, तस्य कार्य परिग्रह, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की दुराग्रह और पूर्वाग्रह से रहित जो ज्ञान चर्चा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये सभी जगह हमें प्राप्त होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आचार्य अभिनव गुप्त की क्या विशेषता इस पूरे आगम और निगम वाङ्मय में है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा कश्मीर की तरफ चलते हैं। तो वहाँ जो ज्ञान धारा आगमों से आ रही है, 3 प्रकार के मुख्य रूप से आगम हैं। एक को द्वैत मूलक आगम कहते हैं, एक को द्वैताद्वैत, एक को अद्वैत। इन सभी आगमों का आविर्भाव स्वयं भगवान शिव के मुख से हुआ है। कश्मीर का जो त्रिक दर्शन है, नर शक्ति शिव, नर शक्ति शिव के कारण इसको त्रिक कहते हैं, 3 का समूह, नर शक्त्यात्मकम शिवम, इसलिए इसको त्रिक कहते हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया के कारण भी त्रिक कहते हैं, परा अपरा और परा शक्तियों के कारण भी इसको त्रिक कहते हैं, अन्य अन्य कारण भी। जो अभी मातृमान प्रमेयांश शूलाम्बुज कृतास्पदाम, अभी जो मैंने मंगलाचरण पढ़ा, तो प्रमेय प्रमाण और प्रमाता, इनके कारण भी इसको त्रिक कहते हैं। तो इस जो शिव के उसमें त्रिशूल में आपको त्रिक दिखता है, बेलपत्र बिल्वपत्र में जो त्रिक है, इस प्रकार से एक प्रतीकात्मक उसका विधान किया गया है। तो इस ज्ञान संस्कृति में, इस आगम से प्राप्त होने वाली ज्ञान संस्कृति में, जो आगम है वो शिव प्रोक्त, शिव या शक्ति या देवी के द्वारा कहे गए 10 प्रकार के द्वैत आगम हैं,
18 प्रकार के द्वैतागम हैं और 64 प्रकार के ये अद्वैत आगम हैं। और इनकी जो व्यवस्था है वो इस रूप में है कि हम देखते हैं कि आचार्य अभिनवगुप्त में ये तीनों ही आगम कुल मिलाकर के 52 हो जाती है इनकी संख्या। उनके जैसा विराट अध्ययन और उतनी ही गहन साधना का की पृष्ठभूमि बहुत कम आचार्यों को प्राप्त है। और इसीलिए इन तीनों ही शाखाओं में जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी चर्चा आई है, जो कुछ भी साधना पद्धतियां वर्णित हैं, उन सबके प्रमाणभूत आचार्य के रूप में अभिनवगुप्त हमारे सामने आते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि यह नाम अभिनव जो नाम है अभिनवगुप्त, यह उनका माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभिनवगुप्त ने स्वयं कहा है कि ये मेरे अपने गुरुओं के द्वारा दिया हुआ नाम है। ठीक है, तो इसी रूप में उनकी ख्याति है। और यह अभिनवता, यह अभिनव पद उनके सभी प्रकार के लेखन में, चाहे वह दर्शन में लिख रहे हों प्रतिविज्ञा शास्त्र के रूप में, तंत्र के रूप में लिख रहे हो तंत्रालोक, तंत्रसार, परात्रिशिका आदि इन सब ग्रंथों में, या फिर साहित्य के ग्रंथ लिख रहे हों जैसे ध्वन्यालोक, लोचन उनकी बड़ी विश्व प्रसिद्ध टीका है आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर, और अभिनव भारती नाट्य शास्त्र पर उनकी विश्व विख्यात टीका है। इन सब में वो संगीत के भी आचार्य हैं, वो व्याकरण के आचार्य हैं, वो कवि हैं, वो भक्त हैं, वो साधक हैं, वो दार्शनिक हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं। इन सबको, इतनी सारी विशेषताओं को समाहित किए हुए अभिनवगुप्त का विराट व्यक्तित्व हमारे सम्मुख आता है। और इसीलिए जब वो, एक और विशेषता यह भी है कि जहां भी वह, चाहे दर्शन में लिख रहे हों, चाहे साहित्य शास्त्र में लिख रहे हों, चाहे संगीत पर उनका मत कहीं से उद्धृत होता हुआ दिख रहा है, इन सब में एक अद्भुत एकान्विति है, इंटीग्रिटी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के व्याख्याता आचार्य के रूप में अभिनवगुप्त हमारे सामने आते हैं। और यहाँ जो कश्मीर का जो शैव दर्शन है, त्रिक दर्शन है, उसकी 4 शाखाएं हैं। एक को कहते हैं ज्ञान प्रधान शाखा और दूसरे को कहते हैं योग प्रधान शाखा। मित्रों, मैं आप सभी विद्वान विदग्ध हैं, आपसे केवल सांकेतिक रूप से ही चर्चा करना पर्याप्त है। आप जानते हैं कि यह जो परंपरा आरंभ हुई स्वयं भगवान शिव के उपदेश के द्वारा, दुर्वासा को उपदेशित किया उन्होंने। उसके बाद दुर्वासा ने अपने 3 शिष्यों, जिनका नाम अमरदकनाथ, श्रीनाथ और त्र्यंबकनाथ है, इनके द्वारा द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत आगमों का उन्होंने वो अपने मानस पुत्रों को, इनको तीनों को उसकी दीक्षा दी, उनका अभ्यास कराया, और ये परंपराएं आगे चलती रही कश्मीर में। इसमें पहले जो आचार्य, जो द्वैत शाखा के आचार्य हैं, वो त्र्यंबकनाथ हैं, और एक और संप्रदाय उनके पक्ष से ही चलता है जिसको हम अर्ध त्र्यंबक कहते हैं। यह त्र्यंबक की पुत्री के पक्ष से यह संप्रदाय चलता है। तो इन्हीं 3.5 मठिकाओं में, मठिका कहते हैं जो ज्ञान के केंद्र हैं, हमारे साधना के केंद्र हैं उनको, इन्हीं 3.5 मठिकाओं में यह संपूर्ण शास्त्र जिससे अभिनवगुप्त जुड़े हुए हैं वह हमारे सम्मुख आता है। तो इसमें त्र्यंबकनाथ के बाद के लगभग 14 पीढ़ी के आचार्यों का नाम उल्लेख भी हमें आज प्राप्त नहीं है। 15वीं पीढ़ी से नाम का पता चलता है। 8वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए जिनको हम इनको हम जानते हैं सोमानंद के नाम से। सोमानंद, जिनका ग्रंथ हमें प्राप्त होता है शिव दृष्टि, 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इसमें इन्होंने अपनी आचार्य परंपरा का उल्लेख किया है और स्वयं को वो 19वीं पीढ़ी का आचार्य बताते हैं, और अपने से पूर्व 4 पीढ़ी के आचार्यों का नाम से उल्लेख करते हैं, जिसमें संगमादित्य, वर्षादित्य, अरुणादित्य और आनंद, ये 4 आचार्य सामने आते हैं। और 19वें आचार्य के रूप में सोमानंद हैं। फिर इसके बाद उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त और लक्ष्मण गुप्त के शिष्य अभिनव गुप्त। तो हम 10वीं शताब्दी में आ जाते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी में।
तो इसकी दो प्रधान शाखाएं हैं इस शास्त्र की। एक को हम कहते हैं ज्ञान प्रधान शाखा और दूसरे को कहते हैं योग प्रधान शाखा। ज्ञान प्रधान शाखा में हाँ, एक चीज और यहाँ पर जोड़ दूं मैं कि यह परंपरा अनवरत रूप से चलती चली आई 20वीं शताब्दी तक, और अंतिम आचार्य के रूप में स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को हम पाते हैं 20वीं शताब्दी में, जो उसी अभिनव गुप्त आदि की परंपरा में। एक बात और भी ध्यान देने की है कि ये सभी सिद्ध कहे जाते हैं, सिद्ध वसुगुप्त, सिद्ध वसुगुप्तनाथ या सिद्ध सोमानंदनाथ, सिद्ध अभिनव गुप्तनाथ। तो आप कभी इस पर भी विचार करें कि जो नाथ संप्रदाय है उसका कश्मीर से क्या संबंध रहा है। ये सभी नाथ के उपाधि धारण करने वाले आचार्य हैं, त्र्यंबकनाथ से लेकर के श्रीनाथ, अमरतकनाथ, त्र्यंबकनाथ से लेकर के अभिनव गुप्तनाथ और स्वामी लक्ष्मण जी तक। तो ये पूरी परंपरा चली आई। 20वीं शताब्दी में स्वामी जी का, स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जी का 1991 में दिल्ली में ही देहांत हुआ। वहाँ जो स्थिति कश्मीर की रही, वहाँ से वो विस्थापित होकर के जम्मू आए, फिर दिल्ली आए, तो फिर यहीं उनका देहावसान हुआ। तो इस प्रकार से ये पूरी परंपरा, अब पता नहीं आगे भगवत कृपा ही होगी तो चल पाएगी, और क्या कहें। तो जो ज्ञान प्रधान शाखा है उसमें कौल संप्रदाय और प्रतिभिज्ञा है, ये दो शाखाएं हैं ज्ञान प्रधान। और योग प्रधान में क्रम और स्पंद है। अभिनव गुप्त की विशेषता ये है कि इन चारों ही संप्रदायों के प्रमाणभूत आचार्य है, सबसे प्रामाणिक आचार्य। यह विशेषता न केवल भारतीय दर्शन में बल्कि स्वयं त्रिक दर्शन के संदर्भ में भी बड़ी विलक्षण है। ऐसा दूसरा कोई आचार्य यहाँ भी नहीं दिखता। यह इसलिए संभव हुआ कि संपूर्ण जीवन को उन्होंने अपना एक ज्ञान अर्जन का एक ध्येय बना दिया। अपने जीवन का ध्येय ही ज्ञानार्जन था, और इसलिए लगभग 19 गुरुओं की चर्चा वो करते हैं, नाम लेते हैं, जिनसे उन्होंने भिन्न भिन्न विधाओं को ग्रहण किया। अपने समय के सबसे बड़े आचार्य जो रहे उनके समय के, उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने इन सारी विद्याओं को अधिगत किया। तो मैं केवल एक चीज कह करके, चूंकि समय शास्त्र है, प्रतिभिज्ञा शास्त्र, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो कि यह प्रमातृनिष्ठ दर्शन है। प्रमाता का जो अनुभव है वही इस दर्शन का प्राण तत्व है। तो जहां भी आप देखेंगे तो इसमें वो अपने उस पक्ष को जिसमें प्रमाता ही साक्षी है, अनुभव करता है, उसके अनुभव का ही विस्तार आपको दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानम त्रिधा, स्वतः, शास्त्रतः, गुरुतः। कि ज्ञान तीन प्रकार का है, होता है, तीन स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो स्वयं भी, फिर शास्त्र से और गुरु से। इन तीनों में एक अंतर संबंध है जो आप स्वयं ही देख सकते हैं। तो यह प्रमातृनिष्ठ दर्शन है। और इसका एक सिद्धांत है जिसको हम आभासवाद कहते हैं। मतलब जो तत्व हैं, तत्व देखिए, तत्व और त्व ऐसे शब्द बना हुआ है, जहां उसका भाव है उसको हम तत्व कहते हैं। तो इन 36 तत्वों में शैव दर्शन अपनी पूरी जो कहते हैं ज्ञान मीमांसा और साथ ही साथ तत्व मीमांसा, इसको वह बताता है। और यह विलक्षण दर्शन इस अर्थ में है कि यह एक साथ ही दर्शन भी है, धर्म भी है, भक्ति का एक मार्ग भी है, तंत्र भी है, योग भी है, और कला शास्त्र के लिए बहुत ही सुदृढ़ आधार, कला चर्चा के लिए कलानुभूति का एक विशिष्ट और बहुत ही सुदृढ़ दार्शनिक पृष्ठभूमि भी यह प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से इसका महत्व है। अभिनव गुप्त की एक चर्चा करके मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि समय से बहुत मुझे जो समय दिया गया था वो समाप्त होने वाला है। तो मैं केवल तंत्र सार से केवल उनका एक उद्धरण पढ़ता हूँ और उसके साथ ही ये चर्चा समाप्त करूंगा। मैंने अभी चर्चा की आपसे कि हमारा सारा ज्ञान स्वयं को जानने के लिए है। इस संप्रदाय ने, कश्मीर के शैव संप्रदाय ने जिस दर्शन को हमारे सम्मुख उपस्थित किया उसका नाम प्रतिभिज्ञा दर्शन है। प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा कहते हैं प्रतीपम आत्मा अभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाश है।
आत्मा के अभिमुख लाने वाला दर्शन। प्राय हम आत्मा से, अहम से विमुख होते हैं, है ना? अहम गौण हो जाता है, इदम प्रधान हो जाता है। आई जो है वह क्या कहें उसको, अ, वह छोड़ दिया जाता है या उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, और इदम प्रधान रहता है। जो ऑब्जेक्टिविटी है हमारे चतुर्दिक, वही प्रधान होता है। तो यह दर्शन भी जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता रही कि वह आत्मा के अभिमुख लाने वाला दार्शनिक संप्रदाय है। इसको अंग्रेजी में हम अनुवाद करें तो प्रायः रिकॉग्निशन कह सकते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ द सेल्फ, है ना? जिसको हमने विस्मृत कर रखा है, विस्मृत हो चुका है किसी कारण से। उसके लिए बहुत सारी बातें कही गई कि पंचकंचुक होते हैं, त्रिविध प्रकार के मल होते हैं, उनसे हमारे स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो यह दर्शन आत्मा के अभिमुख करने वाला दर्शन है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रतिभिज्ञा। अपने स्वरूप को पहचानना सर्वोपरि हमारा धर्म है, सर्वोपरि कार्य है। और इसी संदर्भ में वह कहते हैं कि यस्मात् समस्तमिदम एकम, ये मैं तंत्रसार से पढ़ रहा हूँ। ज्ञान का सर्वोपरि उद्देश्य बताया गया, यह ज्ञानम मोक्ष कारणम। ये तंत्रसार में ही कह रहे हैं कि मोक्ष का कारण है ज्ञान, मोक्ष का कारण है। यदि वह मोक्ष उपलब्ध नहीं कराता तो वह ज्ञान भी नहीं। सीधी सी बात यह है। और मोक्ष किसको कहते हैं? वो कहते हैं मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्। वो अपने स्वरूप का विस्तार, की उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब कुछ उसी में समाहित है, उस तत्व को जानना मोक्ष है। तो अपने स्वरूप का विस्तार समझ लेना, प्रायः हमारा स्वरूप समुचित रहता है, अहम इदम या स्वपर में विभाजित रहता है, इसके कारण हम इसको संकुचित कर रहे हैं। तो अपने स्वरूप का बोध होना, ये हमारे ज्ञान का सर्वोपरि लक्ष्य है, इसी को हम मोक्ष कहते रहे हैं। और तब कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वमिदम एकम चिन्मात्र तत्वम कालेन अकलितम देशेन अपरिच्छिन्नम उपाधिर्भिर्म्लानम आकृतिर्नियंत्रितम शब्दैर संदिष्टम प्रमाणैर प्रपंचितम कालादय प्रमाण पर्यंतस्य स्वच्छैव स्वरूप लाभ निमित्तम च स्वतंत्रम आनंद घन तत्वम तदेव च अहम। वही मैं हूँ। कैसा हूँ मैं? जो एकमात्र चिन्ह मात्र तत्व है, चित्त तत्व है, चित्त तत्व है, जो काल से और देश से बांटा नहीं जा सकता, जिसको देश और काल के द्वारा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अपरिछिन्न है, जिसको कोई आवृत नहीं कर सकता, जिसको कोई कवर नहीं कर सकता, जो किसी भी उपाधि से, किसी भी डेजिग्नेशन से म्लान नहीं होता, मूर्छित नहीं होता, और आकृतियों से नियंत्रित नहीं होता, शब्दों से जिसको हम कह नहीं सकते, प्रमाणों से जिसको हम प्रपंचित नहीं कर सकते। प्रमाण भी वहाँ अपनी सामर्थ्य खो देते हैं। कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है जो वहाँ तक हमें पहुँचा सके। उसके लिए फिर साधना उपासना की बात अभी चर्चा आपने सुनी, पराविद्या अपराविद्या की। तो पराविद्या का कोई शास्त्र नहीं होता, है ना? वो अपरा जो कोटि की विद्या है, वहाँ शास्त्र हैं। तो शास्त्र हमें उसूर उन्मुख करता है पराविद्या की ओर, अनुभव, उपासना, साधना आदि की ओर। और तो इस प्रकार से जो प्रमाणों से भी अप्रपंचित है, वह स्वतंत्र, अपने में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त, और आनंद घन से पूर्ण, आनंद से परिपूर्ण एकमात्र जो तत्व है, वही मैं हूँ। यही स्वात्म की प्रतीति है। ये इसी को हम प्रतिविज्ञा कहते हैं। इसी को पाने के बहुत सारे उपाय दर्शन में, शास्त्र के माध्यम से, साधना उपासना के माध्यम से हमारे शास्त्रों में, हमारी ज्ञान परंपराओं में बताए गए हैं। और इस प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त हमारे सामने इस पूरी भारतीय ज्ञान पद्धति और परंपरा को एक साथ लेकर के उपस्थित होते हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्य ये है कि कहीं विश्वविद्यालय तंत्र में हम इनको पढ़ाते नहीं, तो यह बहुत बड़ी कमी है। और हम नहीं पढ़ाते, यह ठीक है, लेकिन यह और भी दुखद बात है कि जब पश्चिम के लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, तब हम पढ़ाना यहाँ शुरू करते हैं। अभी मैं जानता हूँ एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रिनारियो नोली, रोम यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर, पिछले 50-60 वर्षों से निरंतर कश्मीर शैव दर्शन का अध्ययन अध्यापन वहाँ हो रहा है। अब तो उनकी अवस्था 94-95 की हो गई होगी। तंत्रालोक जो आचार्य अभिनव गुप्त का सबसे विस्तृत ग्रंथ है,
8 खंडों में, उसका उन्होंने 40-50 वर्ष लगा करके इटालियन में ट्रांसलेशन किया है। तो ऐसा समर्पण भी देखने को मिलता है, और अपने अपने आचार्यों के प्रति यह उदासीनता, ये उपेक्षा का भाव बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा अकादमिक जगत में। तो चलिए, हम आजकल भारतीय ज्ञान पद्धति या एनईपी की चर्चा कर रहे हैं, इसमें शायद उनके लिए कुछ अवकाश मिले, कुछ चर्चा का अवसर हमें प्राप्त होगा। तो यह हमारा सब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही रोचक और हाईली रिच टॉक दिया, जिसमें बहुत सारे ऐसे आयाम, बहुत सारे ऐसे पक्ष जिनके बारे में हमें पता नहीं था, हमें जागरूक किया. And I hope that these directions, that these new directions that you have opened up for us will lead us to look at some of our knowledge traditions in a deeper and a more nuanced way. Thank you so very much for this. And with this, we draw towards the close of the webinar of the day. And I request my colleague, Dr. Veeramalla Srisailam, to propose a formal vote of thanks. Namaste all. Esteemed dignitaries, colleagues and dear participants, it is my honor and privilege to extend the vote of thanks on this momentous occasion of World Philosophy Day, which has been graced by the presence of distinguished guests and scholars in the field of education and philosophy. At the outset, we express our heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Uma Kanjilal Ma'am. Your unwavering commitment to academic excellence and your visionary leadership continue to guide us on the path of intellectual and institutional growth. We are deeply indebted to our chief guest and keynote speaker, Professor Bala Ganapati Devarakonda sir, professor and former head, Department of Philosophy, University of Delhi, and chair of ICCR, Indology and Gandhian Studies, University of Jamaica. Sir, your erudite exposition on reading pedagogical tools of the Indian knowledge system, a study of the Chandogya Upanishad, has illuminated profound dimensions of our philosophical heritage. Your insights not only unravel the depth of Indian philosophical thought, but also bridged its relevance to our contemporary pedagogical discourse, leaving us enriched and inspired. We also extend our profound thanks to our guest of honor, Professor Rajneesh Kumar Mishra sir, from the School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University, for his enlightening address on tantragamic assumptions of Abhinava Gupta. Sir, your presentation unveiled the intricate layers of Abhinav Gupta's contributions, highlighting the confluence of metaphysics, aesthetics, and spirituality in Indian traditions. Thank you, Director SOITS Professor Nandini Sinha Kapoor ma'am, for organizing this webinar. Thank you, Moderator, for Professor Shubhangi Vaidya ma'am. Thank you, registrars and deputy registrars of all the divisions, including administration, SRD, SCD, MPDD. Thank you, dear directors of all the schools and divisions, RSD, EMPC planning division. Thank you all the regional directors of IGNO. Special thanks to COE director and staff, and PRO Rajesh ji for unwavering supporting in the broadcast. I again thank all the faculty members of SOITS, consultant in philosophy Dr. Suganya ji, and faculty members of other schools of IGNO, and faculty members of all other universities who have participated in the webinar as participants, students, and research scholars. Thank you, Vananda. Thank you, Dr. Veeramalla ji. And with that, we wind up our webinar for the day. Thank you so much to all the distinguished participants. Sure. Thank you so much. I will take just 1 minute. Special thanks to our chief guest, Professor Bala Ganapati ji, Devarakonda ji. He accepted our invitation in 1 minute's notice. Sir, we are extremely grateful. And
Thank you. Guest of honor, Professor Rajneesh Mishra ji. नमस्कार 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 सर Bala Ganpati ji, are you in India or in Jamaica? Yes, sir. I'm back in India. I'm with Delhi University now. Yeah. Okay, sir. I Because got back 4 months ago. Yeah. I visited twice, I didn't see you there. Yeah, we missed. But yeah, I look forward to seeing you probably during Vedanta Congress. I'll be there and I'll see you. Wonderful. Wonderful. Namaskar. Thank you, both the guest of honor and our chief guest. We look forward to have you again for academic deliberations in our School of Studies, since we house philosophy program. Thank you so much for your valuable contributions. Namaskar. 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 Madam, thank you so much. Nandini ma'am, this is Dr. Chitresh speaking. Hi, Dr. Jitresh Soni ji. Yes, ma'am. Thank you so much for inviting Professor Rajneesh Kumar Mishra, sir. I had the distinct privilege to be his student in all the first semesters in my MA. Very happy to know that, Chitresh ji. Very happy to know. And like just my second father. Oh, so good to know that. And हमने सुना सर के बारे में. In fact, चीफ गेस्ट सर देवराकोंडा जी भी कह रहे थे उनके बारे में. He is a highly educated scholar and highly regarded and respected in our philosophy, scholarship, Sanskrit and Hindi scholarship. Thank you, Chitresh ji, to add on to our deliberations. Thank you. Thank you, ji. Please keep Congratulations, madam. Nandini, madam. Shubhangi Thank you Vaidya, all madam. thank you all the RDs, Bombay, Kolkata. I can see more RDs have also joined. That is really very, very encouraging and very inspiring, and adding support to our webinar and to our philosophy program. Thank you. Yes. Thank you, ma'am.